Hey there traders, Dr. C.K. Narayan here. On the 11th day of April, we are doing a post-market analysis. 2 days of this week have gone and the market, as you can see, seems to be in a mood to continue its uptrend. Now, if you have been following me on Bloomberg Quint, where I write a weekly column, if you have not seen it, do subscribe to BQ Prime and then you can read what I write there on a weekly basis. There I had mentioned, at the start of the year that the market will actually put in a low, and perhaps indeed it could be the low of the year at the end of March. And then what we have seen is that the full decline from 1st of December all the way down till March has been the way the prices have fallen, and every bottom has been lower, every top has been lower. So the classical lower top, lower bottom kind of situation. After all that, for the first time, if you notice in this rise, which is not visible in this rise or this one, there is no sequence of higher top, higher bottom. So for the first time, you're getting a sequence of higher top, higher bottom. That's point number one that you got to keep in mind. Point number two, this higher top, higher bottom comes on top of an expectation of a bottom to be made in end of March. 20th of March is when we made this low here on the Nifty, and 16th of March for the Bank Nifty. The Bank Nifty, being the more traded counter these days, actually tends to make a top later in the cycle when things are up and earlier in the cycle when it has been going down. So the top in Bank Nifty was on 14th of December compared to the 1st for the Nifty, and it bottomed out a little ahead on 16th of March compared to the 20th of March. Be that as it may, what is more pertinent or germane to the discussion we are having right now is that there has been a higher top, higher bottom sequence made. Now, switching over to a little bit of Hindi for our Hindi friends. आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रीवियस स्विंग हाई जो है निफ्टी बैंक निफ्टी की, ये बोथ दीज हैव बीन रीच्ड. ठीक है, जो प्रीवियस स्विंग है वो हमेशा एक रेजिस्टेंस की तरह काम जो करती है. तो इसलिए आप देखेंगे कि कल विच वाज ऑन द 10th मंडे देयर वाज अ वीकनेस विच अपीयर्ड इन द बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी नीचे क्लोज हुआ. इनफैक्ट उसमें एक छोटा सा एक बेरिश एंगल्फिंग टाइप पैटर्न हुआ. और एक साथ में इफ वी ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन हियर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप राइट एंड जॉइनिंग दिस लास्ट swing high here, so what we can see is that the weakness on Monday actually came at the site of the trend line. तो आइडियली अगर ये सचमुच का वीकनेस होता तो आज 11 तारीख को ये प्राइसेस नीचे जाने चाहिए थे. हालांकि हम अभी देख रहे हैं आज 11 तारीख की ट्रेडिंग हो चुकी है और प्राइसेस हैव एक्चुअली गॉन अप एंड दे हैव क्रॉस द ट्रेंड लाइन. निफ्टी में भी करीब करीब यही सिचुएशन है, ट्रेंड लाइन के आसपास आया, कल डोजी के पैटर्न दिखाया और आज वापस एक फुल ग्रीन कैंडल का इजाफा हुआ है. सो नाउ व्हाट डज दिस रियली मीन? दिस मीन्स दैट द मार्केट इज मोर इन अ मूड टू कंटिन्यू. तो ये हायर टॉप हायर बॉटम एक तो हो यहाँ पे हो चुका, ट्रेंड लाइन क्रॉस हो चुका. अच्छा, चलिए देखते हैं कि कोई मोमेंटम का कोई सिग्नल मिल रहा है. एक आरएसआई इंडिकेटर को ऐड करते हैं. तो ये अभी लग गया हमारा आरएसआई, 14 पीरियड आरएसआई, ये डेली चार्ट में लगा रहे हैं हम. और आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट में देयर इज़ अ क्रॉसिंग ऑफ 60 लेवल, एंड 60 लेवल पार कर जाना मोमेंटम को, वो भी एक हल्का सा राइज है, कोई इतनी बड़ी राइज नहीं है. उस राइज में 60 क्रॉस कर गया. तो उसके पहले आप देखिए यहाँ पर ये जो बॉटम जब भी बनी, जो 16 मार्च की ये बॉटम है, और उसके बाद जो हल्का सा एक हायर बॉटम बना, उस हायर बॉटम में एक रेंज शिफ्ट का सिग्नल भी आ गया. सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज एवरीथिंग कमिंग इन प्लेस. एक हमें एंड ऑफ मार्च में बॉटम का एक एक्सपेक्टेशन था, बॉटम हुआ, बैंक निफ्टी में भी हुआ, निफ्टी में भी हुआ. उसके बाद हायर बॉटम आना चाहिए था, वो भी आया. In a few days by about the 24th of March we also had a higher bottom. उस higher bottom में what is the good signal that we always must watch out for is whether we are getting a
रेंज शिफ्ट सिग्नल इन RSI, वो भी मिल गई। अच्छा, तो अभी दो चीज़ हो गए, तीन चीज़ हो गए रादर, बॉटम हुआ, राइज आया, हायर बॉटम बनाया, उसमें रेंज शिफ्ट आया। उसके बाद क्या चाहिए, व्हाट वी वांट इज नाउ अपीयरेंस ऑफ मोमेंटम। तो अपीयरेंस ऑफ मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, एक तो प्राइस राइज चाहिए, और प्राइस राइज में एक बहुत बढ़िया सा गैप मिल गया हमें। गैप मिल जाएगा तो मोमेंटम में एक्सेलरेशन हो जाता है। उस मोमेंटम एक्सेलरेशन के कारण वी हैव नाउ गॉट अ पेनिट्रेशन ऑफ द 60 लेवल। उसके साथ साथ क्या हुआ, एक छोटा सा reaction tha at the trend line, and that trend line has now been crossed also, right? So everything is now in place, which is indicating that the market should move up a little more. Now we will go and take a look at the stocks from the banking pack, ठीक है, because that is the next. अगर बैंक निफ्टी को चलते रहना है, मैं बैंक निफ्टी पे क्यों कर रहा हूँ, the main reason is that the bank nifty is the more traded index. तो इसमें ट्रेडिंग सेंटिमेंट जो है, साइकोलॉजी जो है लोगों का, वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। हालांकि निफ्टी इज़ द मेन इंडेक्स फॉर द मार्केट, नो डाउट अबाउट इट, बट देन वी while analyzing we will look at the bank nifty, right? So now let us take a look at the stocks from the banking pack. We will look at the main stocks of the bank nifty. तो अभी आप देखिए सारे बैंक्स के स्टॉक्स के प्राइसेस यहाँ आ गए। So what we are looking at here, तो आप यहाँ देखेंगे आज के प्राइस एक्शन में होल लॉट ऑफ ग्रीन्स, राइट, एवरीथिंग हियर इज इन ग्रीन। कोटक बैंक जो है दैट इज द हाईएस्ट गेनर हियर, राइट। कोटक बैंक इज अ बिग गेनर एट 4.82%. देन you have Bank Baroda and AU Bank and etc. CNX PSU banks is 1.61% up. So Nifty Private Bank is about 1.15% up. So everything has participated, and as you can see, many greens here. Now the telling point is that Kotak Bank decent weightage in the Bank Nifty, right? उसके बाद ICICI Bank 1.35% up, very large weightage in the Bank Nifty. State Bank of India, that's another one with a decent weightage in the Bank Nifty. What is missing in the list and coming up a little at the lower end is HDFC Bank. HDFC Bank has clocked in with 0.44%. ये क्यों है, क्योंकि HDFC Bank has moved in advance of all these other banks. तो today was a time when the other banks were catching up. तो इससे क्या जाहिर होता है कि सारे banks are in good form, और if they are all in good form, you also can see that additional bank, the lower rung bank जिसकी इतने weightage नहीं है, but फिर भी बैंक निफ्टी को थोड़ा हेल्प तो करते हैं बढ़ने के लिए। AU Bank, Bank of Baroda, so these are there, Can Bank, all of them are participating. So PSU banks is up, private banks are up. So it is very evident that it is more than likely that for the next couple of days also, today is Tuesday, so Wednesday, Thursday, no more holidays, so both the days are available. और मैं टाइम साइकिल के अनुसार देखूँ तो what I have found is that this entire week there is a probability which will even spill over into next week कि एक करीब 19-20 अप्रैल तक हमें एक ओवरऑल मार्केट में एक बढ़ोतरी होना चाहिए। वी विल हैव अ राइजिंग मार्केट, दैट डजंट मीन दैट एवरी डे टिल 20th इट विल राइज, देयर मे बी डेज इन बिटवीन इट माइट गो डाउन अ बिट, बट जो भी दिन हल्का होगा मार्केट, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन शार्पली, इट विल गिव यू अ फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो हमें एक तेज़ी का धारणा रखना है अपने दिमाग में, और उसमें बैंक्स हैव टू लीड, राइट। सो दैट इज़ द की थिंग, क्योंकि बैंक्स के जो वेटेज है इट्स ओवर 30% ऑन द निफ्टी। आपको ये भी याद रखना है कि ट्यूसडेज आर एक्सपायरीज फॉर द फिन निफ्टी, और फिन निफ्टी में भी ये जो बैंक्स हैं उनके काफ़ी हेवी वेटेज होते हैं। कोटक बैंक की जो बढ़ोतरी आज हुई 4.82%, दैट वाज बिकॉज ऑफ अ न्यूज़। उसकी जो वेटेज है इन द MSCI दैट इज़ गोइंग अप एट्सेट्रा, उसके बारे में सवेरे न्यूज़ आ गया था, इसलिए वो गैप के साथ खुल करके इट हैज़ काइंड ऑफ मेंटेन्ड अप। सो फिन निफ्टी, all this helped. Fin Nifty helps Bank Nifty helps Nifty. So banking is the main pack we always have to be focused on. Everything else is going to help the Nifty move or the markets remain in a better or a weakish trend. उसमें Reliance आ जाता है, ITC आ जाता है, कोई TCS Infy आ जाता है। अब TCS Infy की बात हो गई तो then the earning season is going to kick off,
in 2 days from now, and it is going to kick off with Nifty and TCS. तो इसके चार्ट देखना ज़रूरी है, और इसके चार्ट्स में मैंने थोड़ा सा एक स्नीक पीक कर लिया है, तो उसमें ये एक नज़र आता है कि कोई बहुत बड़ा बिल्डअप नहीं है, बट जिस किस्म के बिल्डअप है, एक वी विल हैव, लेट्स हैव वन ऑफ द चार्ट्स ऑन द थिंग. I'll put on the chart of TCS फॉर एग्जांपल. तो ये TCS के चार्ट है विद द OI हियर लोडेड. ये अभी TCS के चार्ट मैंने लगाया है, उसमें इसका जो OI चेंज है अभी रोल ओवर हुआ, तो दिस इज़ फॉर द न्यू मंथ. what you can see is that there is a gentle build up in OI as the prices have moved up. So it is possible that shorts have got squared up ahead of the results. A little bit of long position build has been made. This is visible, I think, in LTI Mindtree. That is the only other stock where I found some positive build up. Infy, Tech Mahindra, all of these are not really showing any kind of build up. तो मुझे क्या लगता है कि जो हल्का सा बढ़ोतरी आया इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, दैट इज़ मोर आउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग. तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है. TCS में थोड़ा सा बिल्डअप है, और बिकॉज देर इज़ नॉट मच ऑफ एन एक्सपेक्टेशन, if the results are in line with expectation, nothing much may happen in the technology section. But if something of a positive surprise comes, then there will be room for a build-up of fresh OI in the technology stocks. And since they are well weighted, they will contribute to the gains which the Nifty will make. तो हमें बैंक्स पे ध्यान रखना है, और हमें ये जो टेक्नोलॉजी लीडर्स है, इन्फी, TCS in particular, that is starting off, and then you can keep a eye on the others, and of course as the other results will start flowing, that also has to be seen. So summing up now, the thing is that, as I said, a bottom was expected, then a shift to a higher bottom scenario was what we looked for. That happened. Second thing happened. Third is we wanted momentum to increase. Momentum has increased, and the RSI has gone above 60, so that is good. Now we are seeing that in banks there is a decent amount of participation, and that is the highest weighted sector. अगर उसमें थोड़ी सी continuation होती है, तो then we should get further gains in the index. So whereas the Nifty, whereas the bank Nifty it has come up to somewhere around 41,300 levels, and 41,300, 400 levels, and the Nifty itself has come up to somewhere around 17,600 levels. Now there is a possibility of the Nifty going up to somewhere around 17,800, and if beyond that it could go up to 18,000 levels also. That will all depend upon how much of contribution comes from individual stocks. If the technology stocks get added in their action, then we can look for Nifty to go till 18,000 also. Otherwise, another couple of 100 points seems quite possible on the Nifty. On the lower side, I think because earning season is going to start, there will be an inclination for people to wait to see earnings कैसे आते हैं. तो बहुत ज़्यादा गिरावट का उम्मीद है नहीं. तो 17,300 जो इसका एक टिपिकल बॉटम हुआ करता था, 17,300 है, उसके नीचे 17,050, 17,080 के आसपास, ये दो बॉटम समझ के चले फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द एनालिसिस ऑन द निफ्टी, बैंक निफ्टी for the rest of the week. Thank you for joining me in this video. We'll try and do more of these later. If you like the video, do share it with others. Crush the bell icon so that you will know when I make more such videos. Keep in touch with the Neo Trader channel. If you have not joined it already, please do subscribe. Thank you so much once again. Until I see you in the next video.